Okay, so we are very soon going to start this. I am also excited because this is for the first time I'm going to say share these kind of things, and it was a bit on demand because many people were requesting such things to me, and that's how I have joined. I have decided that let me take one class for this, and this is really very important. होता क्या है कि many times we need at least something to depend upon, and it is very good to depend upon, maybe to some god, maybe to some deities, maybe to some mantras, maybe to some yantras also. And the entire numerology, especially the Eastern numerology, and among them the Indian Vedic numerology, very highly depend upon the deities, the mantras and the yantras. This is actually obtained from a very old book named Yantra Chintamani. Maybe I think I have mentioned about this book during my advanced classes that you have already taken. And that's the thing. And that's where it has been written. So mainly that I am going to discuss is how you can enhance your life with the power of these yantras and mantras, and whom you can worship as your deity. Okay, so it's not that Pythagorean system that I used to teach in your previous courses that I have done, and this is something very Indian, I will say, very Vedic, very Vedic. Okay, so let me start the screen. Is it visible? Yes. Okay, yes. That's great. That's great. Please tell me if you can see the full screen. Yes. Okay, that's great. So let's start. So this course is for yantras, mantras, deities, and some remedies that you can do. I hope that day Devji was calling me, and Devji was asking about some remedies and all that, and he also shared one experience that Devji, आपको किसी ने बोला था ना किसी को खिलाने के लिए कोई रेमेडी वगैरह? You are on mute. Yes. Yeah. कुछ खिलाने के लिए I don't get you. No, कोई बोला था ना कि गाय को खिलाओ या कुत्ते को खिलाना अच्छी बात है, ऐसा करके कोई आपको बोला था. So these kind of remedies are also very strong thing. Okay, because क्या होता है, जो डेटीज होते हैं, अगर वो हमारा डेटी बन जाते हैं और उसके वाहन को हम खिला देते हैं तो वो डेटी भी खुश हो जाते हैं. Okay, so this kind of thing happens. Okay, suppose I am saying that you need to worship somebody, any deity, और आप उसके वाहन को खिला रहे हो, तो that's a very 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 good remedy, and all these things I will also try to discuss in this thing. Okay, and you already know that I am a numerology, tarot and Feng Shui consultant. You already know that, though I am doctorate in zoology and I am an assistant professor of zoology in a college. This is actually my profession. So properly my PhD and research and all that actually goes on with this thing, and it is not a private college, to inform you that I am a class 1 officer of government, and that's the thing actually. Now this is, I have started only to help people because I know this, I am practicing this, I have started reading this during my school days. I will say it has become it has been nearly 20 years, 20 odd years that I am practicing numerology, and that's how I suddenly thought that why not to help the other people. Okay, so now you can go on mute. Okay, everybody, and if you wish to save your data, you can also switch off your videos because it's not yet necessary at this moment. Okay, so we can start. I'm hearing some other sounds actually.
Okay, thank you. Thank you. So this is just a quick thing to make you informed that what are my services that I actually offer. This is mainly one-on-one live consultation on numerology reading, and this is not less than 1 hour. I talk about all the things, and I mainly talk about all the questions. Okay, and these are all included. These are all included. Okay, now next is the tarot card reading that I also do. If you have some specific questions of the current time, you can have a chat with me also. And here, just to inform you, here we are having Risha ma'am in our group. Risha ma'am is an accomplished tarot card reader. So if you want to do some consultation also, you can take consultation from Risha ma'am also. Okay, now another thing is, I'm not a person of actually the Indian Vastu, but I'm a person of Feng Shui consultation. I know Feng Shui and I do this also. And I think I have discussed this Feng Shui and all these things with, I can remember with Bosmia sir and Yogita ma'am. I think Yogita ma'am was buying some duplex and Bosmia sir was also buying something, and we were discussing. Okay, so these are the major things, the services that I provide. And I have some courses. Some of you already know, some of you have gone through all the courses, some of you have gone through 1 or 2 courses, some courses. Okay, I have 1-2 days foundation course. Devji, you haven't done this. Everybody else have done this basic course. Okay, Devji, this 140 rupees course of 2 days basic. Okay. Next thing is the advanced course that I have for weekend class. One weekend class, usually on Saturday, Sunday, or Fridays, depending on the batch. It is actually nearly 8 to 10 hours of class. And there is also an advanced name numerology course, the same thing, again 8 hours. And here many of you are already present who have done both the courses. Now I have an offer. If somebody wants to know both the advanced course and the name numerology course, they don't have to pay 10,000. They can pay 8,200. This is just as they are buying the whole thing together. And next, also I have the advanced tarot course. It's a very big course actually. It takes nearly 6 to 7 classes. So that's the thing. These are our courses, and what we actually learn, those who have already done, they all already know that these are the things, that number family, positive, negative numbers, and all that, what numbers are stressful, which numbers are not. And I depend upon Pythagoras grid, not Loshu grid. And there are 14 triads and some duads are also there, and obviously the missing number remedies are there. In advanced numerology, there are the 6 numbers of destiny, the karmic debt numbers and all that, the hidden numbers, color correspondences, health issues, and all that are discussed in this thing. And numerological maturity and how to predict a particular year, because you people who have done this course, you already know that I don't rely upon personal year only. I always say that if only personal year can express everything in a particular year, that means every 9 years you will have the same life and same impact, but it doesn't happen actually. So some other numbers always play. And next thing is the Feng Shui based remedies on the missing numbers and repeated numbers. And here I love this thing, the repeated number, because most of the courses and most of the cases that I have seen, and you will also see, that people share the remedies of missing numbers. But if somebody has repeated numbers, very few numerologists will discuss this thing, and you people can understand. Okay, next is name numerology course. That is, the first is meaning of A to Z, and then the vowels and all that. And here in this particular course, there are 2 bonus things, that is house number or car number remedies. Now somebody have some car number that may not go with them, or somebody living in a particular apartment or house number is not going with their ruling number or life path number. And also how to understand the marriage age, so how to predict the marriage age. That means
on which particular year one can get married. So these two things are bonus, and all those 9 points will be covered. And there are the advanced tarot course from the history of tarot, the entire Rider-Waite-Smith deck, and how to attune, how to cleanse, how to protect yourself. Because many people, many times I have seen that many clients come to you with very much negative energy, and what happens whenever you are trying to answer their question, their negative energy actually comes within you. So you also need protection. I think Risha ma'am has felt this. Risha ma'am, can you respond regarding this? Yeah, this has happened. I burned my hand twice. You know, that happened with the client. And you may feel drained out. You may feel drained out entirely. Yes. Because of that, negative energy is also coming, because you are taking their energy and then you are shuffling your cards and then you are doing something. So the protection of yourself is also very much important. And also the numerology, the color coding, the astrology, the entire thing of tarot is covered, and how you can understand and how you can do, along with the spreads that are offered in this course. Okay, now this is what we offer, the basic things and the courses. Now let's come straight on to the actual thing, that is थोडंसं हे सरकवता येईल का तिकडे? ही जागा खूपच कमी आहे तिकडे. ठीक आहे ना, लावलंय सगळे. Okay, you are, ma'am, you are on, your voice on, actually your mic is on. Okay, so this thing we already know one thing, that is the numbers and their corresponding days and planets. We all know this, because we are all numerologists and occult scientists. Actually, we all know this. The thing is, main thing that you will need to know is that the deity whom you can worship. Now here one thing is very important. I have written it also below. You can see it is wise to tally ruling number and life path number both, and then select your deity. Such as, let me ask to Naveenji. Naveenji, what is your ruling number? That is driver and conductor. I hope you can remember ruling number and life path number. 2 and 5. 2 and 5. Okay, so 2 is Shiva and 5 is Parvati. So one thing is, you can worship anyone or both of them. Because if you worship only Shiva, Parvati won't get annoyed or angry, and if you worship Parvati, Shiva is not going to get annoyed or angry. So you can worship any one of them, absolutely any one of them. Okay, and also there are many temples that those are the Shiva Parvati temples. Both idols are there. They are worshipped together. So you can easily worship anyone or both of them if you wish. Okay, right? Because what happens, number 2, we all know, as it is related to moon, we know that Shiva is also known as Somnath. And why Somnath? If you go to the Purans, you will understand the story that Daksha was actually cursed him that आपका क्षय हो जाएगा और आप मर जाओगे gradually. Then what happened? Then Parvati chanted the Mahamrityunjay mantra that she got from that Rishi himself, Maharshi Markandeya himself. And that with that mantra shakti, what happened? Shiva actually उसको अटका दिए थे कि ठीक है, क्षय तो आप हो जाएंगे लेकिन मर नहीं जाएंगे. So and from that, उनको अभयदान देने के लिए Shiva started to put the Chandra onto his jata, his mastak, and that's how he became Somnath. Okay. Yes, Dana ma'am, you need not to write it. Okay, you will get the notes right after the class. Okay, so this is how we can understand that whom we can worship. And Devji was saying something that day. Somebody, maybe some numerologist or astrologer, has told that
आप गणपति का जाप या पूजा करके जाना. And you can see with your numbers, Lord Ganesh is there with number 4 and number 7. You can see your number is there. Mine is 4 and 8 combination. Yes, you 4 and 8 and 4 ruling number. This is mainly for ruling number. Okay. Ruling number 4, Ganpati is there. That's why. And 8 is also Hanuman and Bhairav. Now what happens? You can understand. Hanuman is there, Saraswati is there, Ganpati is there, and 8 also Hanuman and Bhairav is there. And we all know that Bhairav is the Kotwal of Shiva, and Hanuman is the one. Hanuman to Shivansh hai. So you can easily worship anyone who is Shiva himself or anybody who is related to Shiva, and Ganpati is a very good for that. Okay. So Ganpati is very nice. So you can worship anyone who is related to Shiva. You can worship Parvati also. You can worship Kartikeya also. You can worship Ganpati. You can worship Hanuman. Anything. Anyone if you want. Okay. Now this is the thing. Now I think you can get that why that numerologist or astrologer has suggested such thing. Okay. So this is how we can understand that how to choose our deity, because many times many people are actually confused that there are so many gods and goddesses, then whom to worship. Actually it's not. In many people have this, those at least who are not practicing Hinduism, they think that, even many Hindus also think that our religion is polytheistic. No, Hinduism is not polytheistic. Now you may get stunned when I say, yes, there are so many gods, but still we know कि ईश्वर कौन है? एकमेव अद्वितीयम है. He is the one and only one. We all know this. Very deep inside the philosophy of Indian Hindu religion is God वो निराकार है और उनको कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, nothing. Only then how these gods and goddesses came? This is just, I call it pluralism. That means all the deities are actually that particular god. Okay, who is Krishna? He is Shiva, he is Parvati, he is Kali, he is Ganpati. Why? Because there are different sects of Hinduism. If you look very deep, you can understand there are Ganapatya, there is Shakta, there is Shaiva, the Shivites, there are Vaishnav. So all of them. And if you look at the Puranas, you will find that in each and every Puran, you will understand that it is written very clearly that this particular person is the Brahma himself, the Parabrahma. That means that eternal God. So actually, if each and every gods and goddesses has the same component, there is no difference that he is low, she is high, or something like that. Absolutely no. We are worshipping the same energy in different forms. That's how I always say that Hinduism is pluralistic, not polytheistic. That means we worship the same God in different forms, and all are Parabrahmas. It's not that many people have fought for years that Shiva is best or Vishnu is best or Ganpati is best. Somebody told this. War also happened between the two kingdoms. Suppose one king is Vaishnav, the other king is Shiva, and then they fought on that particular matter, who is best. There is nothing to be best or something. If you read the scriptures, if you read the Puranas, you will understand that every gods and goddess has the same component, and all of them are actually Parabrahmas. So worshipping any one of them means you will get the same energy. Then why I'm saying this, that you need to choose this particular deity? Because this particular form actually suits these numbers. Okay, maybe somebody is very much attached to Shiva, somebody is very much attached to Lord
Krishna. Somebody is very much attached to Lord Vishnu. Somebody is very much attached to Lord Ganpati or Lord Lakshmi, Parvati, and Hanuman. Anyone. Okay, this actually very deep rooted within ourselves, within our souls, and within, and as the numbers actually reflect our soul and our personality, they definitely reflect that which form can attract us. And if I am attracted to a particular form, that means I should worship that particular deity. Okay, and now you will have this guidance that whom you tally with your ruling number and life path number. Look at the deities. Think any one of them attracts you or not. If attracts you, very nice. If doesn't attract you, then think who could be a common friend. Okay, just मैंने अभी नवीन जी को जो बोला था, शिवा और पार्वती है, उनका जो नंबर है 2 and 5. सो हम शिवा को भी पूछ सकते हैं, पार्वती को भी पूछ सकते हैं, और 2 and 5 कॉम्बिनेशन है ना, हम नारायण को भी पूछ सकते हैं. Why? Because we know that Shiva and Parvati both are in very good terms with Narayan. We all know that. Shiva meditates about Narayan, Narayan meditates about Shiva. अंदर इनके अंदर वो बैठते हैं और उनके अंदर वो है. यस डेलना मैम. सर अभी मेरा 4 and 7 है. हाँ, सॉरी 4 and 8 कॉम्बिनेशन है. तो हनुमान जी तो कॉमन है, बट लाइक डू आई हैव टू टेक एनी केयर? जैसे पता नहीं, मुझे भैरव, लाइक मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो आई भैरव से थोड़ा सा डर लगता है क्या? यस. हाँ, तो क्या हुआ? Should I only do हनुमान जी की पूजा या क्या सारे? Anyone. सर भैरव और काल भैरव एक ही है क्या? हाँ वही है. काल भैरव एक्चुअली तो मेन भैरव होते हैं, और छोटा छोटा भी भैरव होते हैं जो बहुत सारे जगह बैठे हुए हैं. स्पेशली जो सती पीठ है ना, जो 51 सती पीठ है, वहां एक मंदिर में आप देखेंगे कि वहां उसके बहुत नजदीक एक भैरव का भी मंदिर होता है. भैरव इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर, सो नेवर गेट फ्राइटेंड विद भैरव और काल भैरव. ही इज द प्रोटेक्टर and he is the destroyer of evil. Okay, just like Kali. लोग सर वो डर जाते हैं. तो वो स्तोत्रम सुन के और वो विजुअलाइजेशन से ही थोड़ा सा वो ऐसे लगता है कि हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा चार्ज अप है ना. आप रावण का लिखा हुआ अगर तांडव, शिव तांडव स्तोत्र अगर सुनेंगे, ओके, एंड इट वाज रिटन बाय रावण हिमसेल्फ, तो आपको वो सुन के ही थोड़ा सा कुछ लगने लगेगा कुछ हो रहा है अपने अंदर, क्योंकि वो तांडव है. एंड दैट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो मंत्र होते थे वो साउंड के इम्पैक्ट को लेके ही किया हुआ था. सो इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं. ओके, इफ आई से दैट यू वर्शिप पार्वती, ओके, एंड इफ आई से यू कैन वर्शिप काली, देन यू मे गेट कंफ्यूज. अरे बाप रे, क्या हो गया? अरे वही तो है, मदर गॉडेस ही तो है, और कोई तो नहीं है. ठीक है ना? और वो तो सिंबॉलिज्म है. सिंबॉलिज्म है ना. आशीर्वाद भी देते हैं. आशीर्वाद, एक हाथ 4 हाथ है ना काली का. एक है आशीर्वाद देने वाला, एक है गिविंग हैंड, और एक में मुंड धरे हुए और दूसरे में अपना खड़ग है. दैट्स द थिंग. सो इन वन एंड शी कैन, वो संहार भी कर सकती है, और इन द अदर हैंड शी कैन गिव मेनी थिंग्स. ठीक है, ये सब सिंबॉलिज्म है. अच्छा, नवीन जी वाज सेइंग समथिंग. After that, I'll come to Shoika. Sir, just small query. Yes. जैसा मेरा 2 and 5 है, किसी का 2 and 6 हुआ, तो that will be Shiva and Lakshmi. हाँ. हिंदुइज्म के हिसाब से शिवा एंड लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन नहीं. विष्णु लक्ष्मी का कॉमन फ्रेंड कौन है? कॉमन फ्रेंड विष्णु है ना. विष्णु इज गुड विथ शिवा एंड लक्ष्मी बोथ. Right. So they can worship Vishnu. Okay. Okay. This is how you can easily understand. So we don't have to go exactly by this. We have to take the common factor, logic behind this. बिल्कुल. यही मैं कहता हूँ. Okay. Okay.
This is just suggestions. This is suggestive that I am giving that this particular ruling number can worship this. But it doesn't mean you can look at your life path number and then tally and then understand if there is some common factor, then very good. If there is not some common factor, then try to find out some common friend. Okay. And there are also some anti numbers. Suppose 1 and 8. Suppose 3 and 6. ये सब ruling और life path में आ गया, तो क्या करना चाहिए वो भी हम discuss करेंगे in this class. Okay. Because this is very much confusing. So that's how I have given this part also. Yes, Shoika, please. Yeah, so in my case, it is 1 and 4. Yes. So I don't have any problem with any of the deities. Okay. So that's great. How should I look at all the things? Thing is, if you want to worship, actually, you can choose anyone. Suppose in 1 Shiva is there, Parvati is there, Vishnu is there, and 4 is Ganapati is there, Hanuman is there, Saraswati is there. So you can understand, you can either worship Shiva himself, or you can worship somebody who is very much related to Shiva. You can worship Parvati also, you can worship Ganapati also, you can worship Vishnu also. Now think who actually resonates with you. Who means God is same, God is that Parabrahma. Now you need to select that which form of God actually attracts you. You need to choose your deity according to that. Okay. Got my point? So yeah, I get it, but is it limited to only choosing? Because even sometimes Shiva is maybe a moksha karak, okay, or maybe related to maybe the spirituality, or maybe if the renunciation, okay. Not and always. Vishnu, I can relate with maybe more with the sansar success and all that. Yeah, palan karta, okay. हाँ, पालन करता. और शिवा तो संहार करते हैं पालन करने के लिए ही, और ताकि फिर से स्टार्ट हो पाए ना. Shiva destroys, but why? Destroys for the new creation. Right. Okay. So okay. I'm just saying that who resonates with you. Try to think on these 2 numbers, your ruling and life path. Then look at the deities. Then if you find somebody who attracts you, then definitely go for it. Go for him or her. If you find that there is no common factor, then try to find out who is a common friend of both. This will also work. Got you. Okay. Thank you. And don't think that Shiva is not going to give you the tangible success. Okay. I understand. Yeah. Shiva and Parvati will also give that tangible success. Okay. But if you want, if you don't want that, वो शमशान वाला शिव हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा संसार वाले शिव चाहिए, then you can worship both Shiva Parvati together, or you can also worship the Chandrasekhar roop of Shiva himself. What is the Chandrasekhar roop? Chandrasekhar, we all know that Chandrasekhar is Shiva's another name. Chandrasekhar roop was actually created by Vishnu at the time of Shiva's marriage with Parvati. Okay, and he was the most handsome man of the universe. आप सोच सकते हैं कि विष्णु ने खुद शिव को सजाया था, तो क्या हो सकता है वो इम्पैक्ट. और कब सजाए थे वो? शादी के समय. ओके, क्योंकि पार्वती की माँ मूर्छित हो गई थी शिवा को उस वेश में देख के. This had happened. Okay. So I hope up to this is clear to you. Everyone with me? May I ask you something? Definitely. Yeah, I'm Sunira here. Mine is life path number and ruling number both are 7. So Ganpati and Bhairav. The planet ruling is Ketu. So either Ganpati or Bhairav, whatever is not. Anyone who actually attracts you. Okay. Yeah, I thought the same thing. Thank you. Okay, fine. Okay, everybody with me? Say aloud yes, everybody. Yes. Yes. Great. Yes. Okay, thank you. Okay, now number wise remedy, and this is hard and fast with the ruling number only. Okay, ruling number only. Now just look,
नंबर 1 क्या क्या कर सकते हैं? सी देयर आर वेरी सिंपल रेमेडीज कि आप कुत्ते को खिला दो, कि गाय को खिला दो, कि किसी ऑर्फन को डोनेट कर दो, यही है सब है। ओके, जस्ट एक नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है वही देख लीजिए। बिफोर लिविंग होम ड्रिंक अ ग्लास ऑफ शुगर वाटर। इट्स नॉट वेरी टफ थिंग टू डू, वेरी इजी थिंग। और आप अगर किसी मंदिर में जाते हो तो बहुत सारे मंदिर में यू कैन फाइंड मंकीज and then you can feed those monkeys, you can feed the black cows. Okay, and if you want to donate something, then donate the ruby colored clothes or wheat or sugar candy. Whom? To the needy. Where? In a Shiva, Parvati or Vishnu temple. It's the best place for you because your deity is Shiva, Parvati, Vishnu na. So उनके मंदिर में जाके अगर आप कुछ देते हो किसी को तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। Likewise, number 2, you can look that you can take care of your mother. Actually, everybody of us should take care of our parents, but for the 2 people, they should do it और भी बहुत ज्यादा करना चाहिए। अब one thing is, अगर कोई ऐसा होता है कि they think that I won't take care of my mother, and if he is ruling number 2, उनके लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं। Okay, now one thing is very important that milk related business number 2 वाले को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मिठाई का दुकान दे देते हैं, तो मिल्क रिलेटेड बिजनेस जो है वो उनको नहीं करना चाहिए। वो चॉकलेट कर रहे हैं कि केक्स वगैरह कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन मिल्क नो, नॉट फॉर मिल्क। एंड दे कैन फीड द फ्री बर्ड्स एंड डोनेट राइस इन अ शिवा टेम्पल। Okay, number 3, you can see yellow is, we all know that yellow is the color for number 3. So if he is a Sikh or somebody else who wear turban, then yellow color turban or cap is very effective for them. Then siblings के साथ बहुत अच्छा संबंध रहना चाहिए। They can wear gold jewelry. Now gold jewelry तो हर कोई नहीं पहन पाएगा, लेकिन फिर भी if you have money you can wear it. And this one thing is very lucky for them, that is if somebody is going to appear for some examinations or something like that, if they use their father's pen और फादर के व्हीकल में जाते हैं, फादर का स्कूटर या फादर का कार लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी बन जाता है। for them it's very lucky. Okay, and they can donate sweets or bananas or turmeric or sugar to old people or orphans in mainly with the Shiva, Parvati and Vishnu temple. Next is number 4, देव जी again। मैंने भी कहा था कि वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन you can also feed free birds। देव जी याद है ना आपको, मैंने कहा yes. So that's the thing, that's why I have told this। Okay, you can feed the free birds and you can wear dark blue cap or turban if you use it. Then कोकोनट खाने के लिए भी मैंने बोला था आपको, और you can donate coconut और उड़द के दाल in हनुमान टेम्पल, गणपति टेम्पल और सरस्वती टेम्पल। Likewise, number 5 लाइफ पाथ नंबर नवीन जी का है ना। नवीन जी आपका तो रूलिंग नंबर 2 है, तो यहाँ पे कोई रूलिंग 2 लाइफ पाथ 5, लाइफ पाथ नंबर 5 है। अच्छा, यहाँ पे कोई रूलिंग नंबर 5 वाले है क्या इस क्लास में? तो मेरे हस्बैंड है अरिजीत दा, मेरे हस्बैंड भी रूलिंग नंबर 5। अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो आपके हस्बैंड लोगों के लिए they should do this one thing is very important, they should wear wash clothes before wearing. Now क्या होता है, बहुत सारे लोग खरीद के लाते हैं and before washing many people wear it. ओके, नंबर 5 वाले और नंबर 6 वाले को हमेशा नया कोई क्लोथ खरीदने के बाद उसको हमेशा वॉश करके ही करना चाहिए। मेरे साथ, मेरा रूलिंग नंबर 6 है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर अनवॉश पहन लेता हूँ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ट्राई करते वक्त तो नहीं है ना ऐसा, मतलब नहीं, ट्राई करते वक्त नहीं है। घर पे क्योंकि ट्राई जब कर रहे हैं तब भी वो आपका नहीं है, यू आर ट्राइंग दिस। खरीदने के बाद ट्राई आप कर रहे हैं तो अभी तक तो खरीदे नहीं है उसका।
ठीक है। अरिजीता, जो कपड़ा वो वॉश नहीं कर सकते, कुछ कपड़ा होते हैं जिसको वॉश नहीं किया जा सकता, तो उसके केसेस में क्या कर सकते हैं? ड्राई वॉश कर लेते हैं। जो वॉशेबल नहीं है, जो एक वॉश के बाद खराब होने का चांसेस है, ड्राई वॉश कर सकते हैं, ड्राई वॉश कर सकते हैं। एंड हाउ आर यू बाय द वे? आई एम डूइंग गुड, लेकिन हेल्थ बहुत ही ज्यादा। हाँ वही तो, इसलिए तो मैंने पूछा कि हाउ आर यू डूइंग। मैं जानता हूँ, देव जी से मेरा बात हुआ था। आई वाज रियली कंसर्न्ड एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू एक्चुअली। इट्स गुड टू हियर योर वॉइस। ओके, तो मैंने क्या कहा कि नंबर 5 और नंबर 6 वाले, हाँ ओके फाइन 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 ओके, तो नंबर 5 और नंबर 6 वाले को हमेशा दे शुड वॉश क्लोथ्स बिफोर वेयरिंग। एंड नंबर 5 वाले अवॉइड अल्कोहल ऑलवेज। नेक्स्ट इज दे कैन फीड काउज बिफोर दे आर ईटिंग। नाउ ये हमेशा शहर में पॉसिबल नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल इन द सिटीज एंड टाउन्स। गांव में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता। दे कैन ड्रिंक वाटर इन सिल्वर ग्लास, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर एवरीबडी। लेकिन उड़द दाल और राइस और मिल्क तो कोई भी माता टेम्पल में आप दे सकते हैं, दुर्गा हो, काली हो, जगदम्बा हो, कोई भी हो, वैष्णो देवी हो, कोई भी हो, जो माता टेम्पल होते हैं वहां पे आप इसको डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कीप नेवर वॉश वेयर अनवॉश क्लोथ्स, तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट इज कीप अ पीस ऑफ सिल्वर इन वॉलेट। अगर सिल्वर भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सिल्वर कलर का कुछ आप रख सकते हैं। जब कुछ लकी कुछ चाहिए होता है, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और डूइंग समथिंग, दे कैन डू इट। अनदर थिंग इज they should use cow ghee at home. And next is donate sweets to widows and senior citizens, or they can also donate clothes or dairy products to young lady in mainly Narayan or Lakshmi temple. Now here is one thing, we all know that number 6 is very much related to chocolates and sweets and cakes and all these things. Okay, next is number 7. Again, they should donate sweets to the orphans. They should avoid red. Always carry a silver ball. अभी वो सिल्वर कलर का भी बॉल हो सकता है। You can also use the ball bearing, साइकिल का जो बॉल बियरिंग होता है ना, छोटा छोटा, तो you can use that also. You can carry a small ball bearing also, and they can feed black dogs. They can donate black and white checked blanket to the needy in a Shiva or Ganpati temple. Now number 8 is कोई भी small object, silver का कोई भी small object आप रख सकते हैं। Next is you should do some charity, especially for the differently abled people. You should do. Okay. Next is again feeding black dog, and you can also donate black clothes to the differently abled and donate footwears to the needy in हनुमान टेम्पल और शिवा टेम्पल में जो लोग होते हैं उनको कुछ फुटवेयर आप दे सकते हैं। दैट विल बी गुड, देयर ब्लेसिंग्स इज गुड फॉर यू। एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कुछ भी करना इज वेरी गुड फॉर नंबर 8 पीपल। it could be ruling number 8, it could be life path number 8. Doing something for the differently abled people is always good for them. Okay, now last one, number 9. अभी ये देखिए, फर्स्ट जो रेमेडी है ये भी किसी का बंगलो है, घर में रहते हैं जो लोग, वो कर सकते हैं कि ग्रो नीम ट्री एट होम। पर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं शहर में, वो नहीं कर सकते। सो ग्रोइंग नीम ट्री और फीडिंग काउज इज नॉट, उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन यू कैन कैरी अ रेड हैंकरचीफ विथ यू एनी टाइम। नेक्स्ट इज डोनेट ब्लड इन आर्मी फंड्स। ओके, आर्मी फंड के लिए कुछ अगर करने का चांस अगर मिल जाए कभी भी, देन ऑलवेज डू इट, एंड यू कैन डोनेट ब्लड ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। एंड डोनेट टू द फार्मर्स ऑल्सो। एंड स्वीट आप हनुमान टेम्पल में उनको भी चढ़ा सकते हैं, और जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं उन लोगों को भी आप दे सकते हैं जस्ट खिलाने के लिए। दैट यू कैन डू। Okay, these are very simple remedies, but they are very powerful, because whenever you are doing something good for somebody,
you obviously are going to get their blessings, and whenever you are going to get their blessings, this will actually affect you in a positive way always. So this is how it is very good for you if you do at least any one of them. Okay, बहुत easy है ना, टफ तो नहीं होगा? सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर अभी ये आपने जो बताया 1 to 9 दैट इज गुड, बट कभी कभी हम होता है कि हम, जैसे मेरा 4 है लेकिन बहुत सारी चीजें मैं नंबर 7 और नंबर 8 वाले को करना चाहिए वो करती हूँ, तो उसमें कुछ उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होता? गड़बड़ नहीं होता है, नहीं गड़बड़ नहीं होगा। अब क्या होता है, जो नंबर 1 वाले को करना चाहिए वो अगर नंबर 8 वाले करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। जो नंबर 3 वाले को करना चाहिए वो अगर नंबर 6 वाले करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। ओके, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, नंबर 4 का जो करना है वो आप थोड़ा सा कर लीजिए। देन यू कैन यूज कोकोनट खाने के लिए, ये आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन डोनेट कोकोनट्स टू दिस हनुमान, गणपति और सरस्वती टेम्पल्स। एंड बर्ड्स को तो आप जब भी मौका मिल जाए, कोई भी बर्ड्स हो तो उसको खिला दीजिए। बट वन थिंग रिमेंबर, नॉट द कैप्टिव बर्ड्स। ओके, ऑलवेज फ्री बर्ड्स। ठीक है, अभी हाँ सर ये रेमेडीज तो कितने दिन तक करनी है, ऐसा कुछ है? नहीं, कितने दिन तक नहीं, क्या होता है अगर कोई हर रोज अगर करें तो 41 डेज के बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और एक्चुअली ये जब भी अवसर मिले तब भी करना चाहिए। अच्छा, और आई एम कमिंग। ओके, बॉस्निया जी बहुत टाइम से हाथ ऊपर करके बैठे हैं। हाँ, अभी हाथ दुखने लगेगा। ओके प्लीज, यस कैरी ऑन। सर मैं ही बोल रही हूँ, मिसेस बॉस्निया। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक अच्छा, ठीक। ओके सर, वो एक्चुअली ये टेम्पल में डोनेशन नहीं होता है, और घर से ही कोई नीडी पीपल को या कुछ डोनेशन होता है तो? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। अब वो टेम्पल में क्या होता है, टेम्पल के आसपास तो बहुत सारे लोग बैठे हुए भी होते हैं ना। अगर टेम्पल में डायरेक्टली आप डोनेट नहीं कर पा रहे हो, टेम्पल के आसपास जो लोग बैठे हुए होते हैं उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। दैट इज आल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस। नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से तो ठीक है, पर मैं जो अपने घर के आसपास ही सब घर के वो समझे के सर्वेंट्स हो, सिक्योरिटीज हो, के ऐसा कुछ लोग हो, उनको डोनेशन रेगुलरली क्लोथ्स एंड शूज एंड सब करते हैं, खाना भी होता है, तो वो कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डोनेशन टू एनीबॉडी इज एक्चुअली वेरी गुड। ओके, वो ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कुछ कर जाएगा, नहीं। आप किसी को भी कुछ भी देते हो तो उनका जो आशीर्वाद मिलता है, दैट डेफिनेटली एक्ट्स इन अ पॉजिटिव वे इन योर लाइफ। अभी क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो डाले हैं वो अपना जो नंबर है वो अगर आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हो तो वो इफेक्ट ज्यादा देगा और कुछ नहीं। ओके, क्योंकि आज ही मैंने शूट आपका 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 रूलिंग नंबर क्या है? अभी मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया है, अभी मैं भूल गया। 7, रूलिंग 7 एंड लाइफ पाथ इज 8। ठीक है, आप 7 को देख लीजिए। हाँ, तो स्वीट्स आप ऑर्फेन्स को अगर दे पाए, आप अगर रेड कलर को अवॉइड करे, यू आर गोइंग पासिंग बाय एनी रोड और समथिंग लाइक दैट, इफ यू सी अ ब्लैक डॉग यू कैन जस्ट फीड, एक बिस्किट ही दे दे। ये आप कभी भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि अब करना है या 41 डेज तक करना होगा, कभी भी कर सकती हैं। whenever you get opportunity you can do this। अवॉइड टोटल रेड कलर अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसा है ना टोटल? हाँ हाँ हाँ, बिकॉज़ मेरा नंबर 7 भी 8 है, लाइफ पाथ भी 8 है मेरा। तो 7 और 8 कॉम्बिनेशन है ना आपका, हाँ। so you should avoid red। ओके, और आपके ग्रिड में 1 कितनी बार है या 9 कितनी बार है? 1 और 9 कितनी बार है? 8 मेरा 2 बार है। 8 नहीं, 1 और 9। 1 और 9 तो वो 19 की होता है, 1 and 9 एक ही नहीं, कितना है मैं एक बार ही है। 1 एक बार है, 9 एक बार है। हाँ ठीक है, अवॉइड कर सकती हैं आप। अच्छा, ठीक है। क्यों उसका क्या फर्क होता है 1 और 9 का सर? हाँ, वो कुछ नहीं, वो तो मैंने आपको सिखाया था ना, वाटर और फायर का बैलेंस।
हाँ 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 तो हाँ जब भी किसी को कुछ ये आप करिए या आप मत करिए ये देखना पड़ता है, तो फर्स्ट यू डेफिनेटली ऑलवेज मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वाटर एंड फायर बैलेंस। ओके यस यस एडवांस में मैंने सिखाया था ना वो। हाँ 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 फायर वाटर, बहुत सारे लोग बोल देते हैं 3 बार 1 है या 4 बार 1 है, तो बहुत गलत है। नहीं, आपको 9 और 1 को कॉम्बिनेशन करके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो मैंने सिखाया था आप लोगों को। हाँ हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो बराबर है। बस इसीलिए मैंने पूछा। हाँ ओके, क्लियर? यस। हाँ ब्रदर, मयूर ब्रदर, उसके बाद डेलना जी। अरिजीत दा, ये डोनेशन के बारे में जो आपने बताया था, मैं नंबर 2 और 1 वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो 8 वाले काम मैं नहीं कर सकता, है ना। हाँ। तो अभी तो काले कुत्ते को तो अच्छा लगता है, खिला देता हूँ, तो उसमें क्या करें? खिला दो ना, काले कोई कुत्ते नहीं, बात वैसे नहीं। मतलब जितने भी डॉग्स है, या हाँ, फिर डॉग्स को डिफरेंशियली एबल नहीं, पीपल को, मेरे को एक्चुअली चैरिटी क्या बहुत होता है, अच्छा लगता है। काला कुत्ता स्पेशली इज फॉर दोज हु वर्शिप भैरव। ओके, भैरव का वाहन काला कुत्ता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये भैरव जी को ये करने के लिए है, सूद करने के लिए होता है। यू आर नंबर 1 रूलिंग, नंबर 1। नो, नंबर 2 इज रूलिंग। नंबर नंबर 2। एंड अनदर थिंग इज मिल्क रिलेटेड कुछ तो आप करते नहीं हो। जी 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 जी। This is another thing. Another thing is you can feed the free birds always. Okay. और ये डोनेशन मैं कर सकता हूँ ना, जो डिफरेंशियली एबल लोगों को जो बताया था। हाँ, लेकिन वो भी नंबर 8 के लिए ज्यादा है ना। लेकिन डोनेशन अगर करना है तो राइस या स्वीट्स को डोनेट करो, दिस इज बेटर। ठीक है, कोई एक ऑर्फन गर्ल है सपोज, एनी ऑर्फन गर्ल, and you get to know that this is an orphan girl, especially if you donate right or sweets to that girl is very good for you. Okay, sure. I'm saying these kind of things. Okay. डेलना मैम, उसके बाद देव सर से बात करेंगे। डेलना मैम। हाँ सर, मेरा ये था कि एक्चुअली डोनेट करना मंदिर में इज अ वेरी गुड थिंग, बट क्या होता है कि कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जैसे हमारे घर के पास जो मंदिर है वहां पे वहाँ जो पंडित जी या जो भी हैं, somewhere you don't get that sense कि वहां पे करना है, because वो जब भी हम जाते हैं ना, it's all about money. So like in certain places, हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट क्या है वो मेंटली ऐसे होता है, जैसे हम दूध वगैरह लेके जाए तो देन दे विल पुश फॉर आप ये अर्चना करवा दीजिए, आप ये पे कर दीजिए, दैट हैपेंस। सो फिर क्या होता है, फिर वो कुछ भी वहां पे कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो फिर डालेंगे तो यू हैव दैट फीलिंग दैट वो पता नहीं कैसे यूटिलाइज होगा। इट्स नॉट दैट यू आर डाउटिंग, हर जगह नहीं है, बट कभी ऐसे लगता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कि यहाँ पे मुझे कुंडी में नहीं डालना है, या तो उसके मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ना दैट, क्योंकि वो करना इट विल हैव डायरेक्टली कर सकती हैं आप, डायरेक्टली कर सकती हैं। ओके, जब आप कोई भी एक मंदिर में जा रही हो ना, स्पेशली आपके रूलिंग नंबर के अकॉर्डिंग, इफ यू आर गोइंग टू समबडी सम टेम्पल, रास्ते में अगर कोई मिल जाता है उनको भी आप दे सकती हो। गॉट इट? डेलना मैम का थोड़ा सा नेट कनेक्शन थोड़ा सा ये हो गया। ओके देव जी। यस, एक एक्सपीरियंस और लाइक डॉग से रिलेटेड चीज आई वांट टू शेयर। श्योर। In 2012 or 10 I was having a very downfall in my career and everything। तो उस समय लाइक एक मैं राजस्थान में था, तो मैंने एक ब्लैक कलर का पपी में लेके घर में आ गया था। तो वो पपी ऑन द वे ही है, मैं घर तक पहुंचा भी नहीं हूँ, मीनवाइल मुझे बॉम्बे से मेरा जॉब के लिए मुझे वापस बुलाया गया। तो ये चीज़ों को मैंने जब फ्लैशबैक करके रिवाइज किया, तो चीज़ मैंने देखा कि ऑल द टाइम व्हेनेवर आई एम हैविंग ए डॉग,
तो मेरे को लाइफ में, करियर में, इन एवरी एस्पेक्ट्स मुझे बूस्ट मिलता है लाइफ में। तो अभी लास्ट ईयर मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास पेट नहीं था, तो मैं पेट अरेंज करके लाया, तो बट इट वाज नॉट ब्लैक, तो उतना मुझे बूस्ट नहीं मिला, बट इट वाज ओके ओके। बट ब्लैक जब होता है तो ज़्यादा बूस्ट होता है। तो इसको क्या है एक्चुअली में, ये यहाँ पर ये 8 नंबर काम कर रहा है क्या? मेरा जो कंडक्टर है 8 नंबर के लिए ब्लैक कलर है। हाँ, क्योंकि आप देखिए नंबर 8 का जो डेटी है वो लॉर्ड भैरव है ना, दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग। ओके, दैट मीन्स लॉर्ड भैरव चाह रहे हैं कि आप उनको थोड़ा सा कुछ, ओके ओके, समझे? लॉर्ड भैरव इज एक्चुअली कॉलिंग यू दैट कम टू मी, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग, आई हैव समथिंग फॉर यू इन स्टोर, कम टू मी। This is nothing but Lord Bhairav is asking you to do this. No, actually, I was searching why the dog are very lucky or Yes. connected me. हो जाता है, हो जाता है। Yes, and you can see that number 4 is also related to Shiva, है ना? Yes. गणपति हो, हनुमान जी हो, सरस्वती हो, सरस्वती is also all in a very good terms. क्योंकि त्रिदेव और त्रिदेवी they are all very good terms with each other. So actually Lord Bhairav is larking you, nothing else. Okay. It's good. Okay. It's good. Thank you. Good omen and good signal actually. It's great that you are getting this signal. Oh, thank you sir. Okay, Risha ma'am. अच्छा, मेरा तो it's number 7. I hope you can hear me. Yes, I can. So the thing is, my daughter has number 3. Her ruling number is 3. तो अभी हम एक डॉग को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. She wants in white color. And मैं अभी यहाँ पर पढ़ रही थी black is good for me. Black is good for you, okay. हाँ, तो अभी क्या करें, बिकॉज उसका तो ऐसा आप तो पेट तो कोई भी रख सकती है ना, पेट तो कोई भी रख सकती है. It's not necessarily black ना, कि ब्लैक होगा तभी. No, ब्लैक अभी नंबर 7 के लिए ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर 7 भी लॉर्ड भैरव के साथ है. नंबर 7 is also okay. Yeah. So black dog is very much important for number 7 and number 8 people. Okay. अब ये ऐसा नहीं कि आप पेट तो कोई भी रख सकती हो, लेकिन अगर रास्ते में कोई एक ब्लैक डॉग मिल जाए तो उसको एक बिस्किट ही दे दीजिए. ऐसा नहीं कि आपको उसको पेट जैसा रखना पड़ेगा. Whenever you get this opportunity, you should feed a black dog. हाँ, I try to feed. अगर कभी मिल जाता है तो I try to feed. But ये कि घर पे लेकर के आना, तो she is like कि नहीं, मुझे white puppy चाहिए. नहीं, वो तो ठीक है. That you can do anything. पेट तो आप कोई भी रख सकती हो. This is not a remedy for you, but पेट तो आप कोई भी रख सकती हो. Okay, thank you. Okay. And also another thing, you are a good tarot reader, you are a professional tarot reader, and we can understand the first card of tarot, 0, Fool, that wears a white dog. है ना? So that's also good thing to have. Black cat is also another good thing to have. हमारे कल्चर में बोलते हैं अरे ब्लैक कैट है तो वैसा होगा. नहीं, ब्लैक कैट इज गुड. ब्लैक कैट इज वेरी इंट्यूटिव. उसी डिवाइन के बनाए हुए क्रीचर्स हैं. कुछ मुझे नहीं लगता कुछ खराब होता है, कुछ बुरा होता है. वही तो. यस, एक्चुअली दिस इज गुड थिंग. दिस इज गुड थिंग. क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ही देख लीजिए, सामने तो एक ब्लैक कैट बैठी हुई है. एग्जैक्टली. So this is the thing. Okay, I hope I have covered. So Delna, sorry मेरा. हाँ, आप मैंने जो कहा लास्ट में वो ये है कि कोई भी एक आपके रूलिंग नंबर के हिसाब से आप कोई एक मंदिर में, सपोज यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर मंदिर, ओके. और मंदिर में आप मत डालिए. मंदिर जाते वक्त कोई भी रास्ते में मिल जाता है, कोई भी हो सकता है. सो यू कैन गिव देम ऑल्सो. और आप अगर किसी को जानती हो तो उसके घर होके उनको डोनेट करके उसके बाद आप मंदिर जाइए. Okay. Why I am saying this? Because whenever we are going to a मंदिर, हम बहुत शांत होके ऐसा मन लेके ही जाते हैं ना कि this is a good thing that I am going to a good place,
and now I will be worshipping something. तो उस वक्त हमारा मन बहुत शांत होता है. At that time, if you do this donation, then it's very very good for you. That's what I'm saying. ऐसा नहीं कि मंदिर के premises में ही करना पड़ेगा. If you get someone, तो मंदिर के premises में ही you can do this. And if you are not getting such thing, or if you are not getting good vibes, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, it's also क्योंकि बहुत सारे मंदिर अभी बिजनेस सेंटर बन चुका है, वेरी फ्रैंकली टू से. हाँ सर, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता. हाँ, बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिस इज वेरी ट्रू. दिस इज वेरी वेरी ट्रू. तो वहां जाके आप देखेंगे कि उतना आपको सुकून भी नहीं मिलता है. एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिलता. कोई भी मंदिर में जाके जब भी वो पांडास लोग आके ऐसा वैसा करने लगता है, तो उस वक्त मेरा दिमाग गर्म हो जाता है. हाँ सर, मैं हमेशा बोलता, अरे मैं अपना वो निकालूंगा और अपना बीज मंत्र जाप करके चला जाऊंगा. बात तो एक ही है, नहीं चाहिए. वैसा बहुत सारे बार हुआ है मेरे साथ. So this is the thing. Exactly. मैं बोलना नहीं चाह रही थी. This happens. नहीं, this happens. This is very practical thing. बहुत सारा मंदिर अभी बिजनेस सेंटर बन के बैठा है. बहुत सारा मंदिर. So मंदिर जाते समय आप किसी और को भी दे सकते हैं. ठीक है. I hope up to this I am absolutely clear to you. So you are now clear whom you can worship and what kind of remedies that you can do, you can take into practice, so that it can get good vibes to your life. Okay, I hope I am clear. एक सवाल बस एक सवाल था. मान के चले किसी का रूलिंग जो भी नंबर है, अगर वो रिपीटेड है, मान के चलिए नंबर 9 है किसी का, और नंबर 9 4 टाइम्स है, तो उस केसेस में भी वो जो नंबर 9 के लिए जो भी है, जैसे yes, if the ruling number is number 9, despite he is having 4 times or 5 times 9, then also this will work. Okay. Why? Because मैंने कहा था ना कि रूलिंग नंबर इज हु एम आई. आपको याद होगा रूलिंग नंबर, वो जो 6 नंबर्स ऑफ डेस्टिनी में रूलिंग नंबर इज हु एम आई. सो दिस इज माई सेल्फ. सो मेरे पास 5 टाइम्स या 10 टाइम्स नंबर 9 रह सकता है, बट एज आई एम नंबर 9, आई कैन वर्शिप इन दिस वे. रेड कलर वैसे अवॉइड करना चाहिए ना, इतना ज्यादा नंबर 9 है. हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फायर है ना. हाँ, बहुत ज्यादा फायर होने से एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है. जी. और स्किन के प्रॉब्लम का भी चांसेस बढ़ जाता है. स्किन बर्न और स्किन पिंपल्स ये वगैरह बहुत बढ़ जाता है. आंखों का प्रॉब्लम भी हाँ, आंखों का भी प्रॉब्लम है. आंखों का प्रॉब्लम ज्यादातर नंबर 1 और नंबर 5 वाले को होते हैं. देखना कि रूलिंग या लाइफ पाथ नंबर 1 नंबर 5 वाले बहुत ज्यादा आंखों का प्रॉब्लम में पड़ते हैं. रूलिंग या लाइफ पाथ नंबर 1 नंबर 5 को एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा होता है. ओके, देव जी, डू यू हैव सम मोर क्वेश्चंस? No sir, as of now. Okay. Yeah. No, actually your hand is up. That's all. That's why I'm asking. Okay. So everybody with me up to this level? Absolutely. Yes. Okay. Yes. Again, I want to hear a loud yes. Yes sir. Yes. Oh, yes. very good. Now that's very good thing. Yes, I like it. So Okay. तो Yes. रेड से मुझे एक तो अभी जस्ट डाउट आया कि सपोज लाइक आई हैव 4 ones इन माय थिंग, सो और मेरा 1 and 8 भी कॉम्बिनेशन हो गया है, तो यू हैड सेड आई शुड नॉट वेयर रेड. तो अब सर सपोज अगर कुछ रेड पहन लिया है, जैसे फंक्शंस कुछ होते हैं तो रेड पहन लिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई वाटर वाला कलर से हाफ बैलेंस कर सकते हो. वैसे भी आपके पास बहुत ज्यादा वाटर है, इसीलिए आप you on person can wear it. अच्छा. ओके, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ. नाउ whenever you want to do those things, you find out my notes and my videos that I have given in the advanced class, because always you need to tally with everything. Okay. वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी चीज है, इसलिए मैंने अभी इसको रूलिंग नंबर के हिसाब से ही डिवाइड किया है. ओके, डोंट वरी. ओके सर.